हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में और हाउ वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। सो लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो देर आर सेवरल फैक्टर्स responsible for the biodiversity loss, and these factors are classified natural as well as anthropogenic or man-made factors which are responsible for the biodiversity loss. ठीक है, biodiversity loss means loss of the species. It may be animal, it may be plants, it may be related to the microbes. So what are the natural factors? Earthquake, flood is also responsible, tsunamis, volcanic eruption, cyclones, avalanches, drought, and wildfires. So these are the natural sources are responsible for the loss of species. And what are the anthropogenic or man-made factors? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंट में, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन विच we destroy the habitat of a particular species or a particular animal or a particular plant, so it will unable to survive in that harsh condition. So habitat destruction is one of the biggest reason. Then after industrialization, in industrialization we are removing the forest and other things, so that are responsible for loss of the biodiversity. Then after pollution, it may be air pollution, it may be water pollution, or the dumping of the waste. These are responsible for the loss in the biodiversity. Deforestation, again one of the main reason, and this is also lead the habitat destruction. Over exploitation of the resources, poaching and hunting, agricultural practices, population explosion, and introduction of invasive species. मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर कोई एक्जोटिक स्पीसीज आके वहां पे डोमिनेंट हो जाती है, तो वहां की जो लोकल स्पीसीज होती है उसको रिमूव कर देती है. सो दैट इज एंड दिस केस इज एप्लीकेबल इन बोथ द प्लांट्स एज वेल एज इन द एनिमल्स. So these are the natural as well as anthropogenic factors responsible for the loss of biodiversity. So as we know, if we are adding a new species through the speciation process, speciation means the addition of or formation of new species in the earth, on the earth, then there is we also continuing losing a species from the earth. अगर हम एक स्पीशीज को ऐड कर रहे हैं तो हम एक स्पीशीज को कंटिन्यूअसली लॉस भी कर रहे हैं. सो ये दिस इज ए साइकिल, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड एक्यूजिंग फिंगर्स इज क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. सो मेनली the anthropogenic sources are responsible for the losing of the biodiversity. Then after the colonization of tropic Pacific islands by the humans is said to lead the extinction of more than 2000 species. So these Pacific islands having the rich in the biodiversity, and due to the human anthropogenic activities, industrialization, colonizations, construction activities, there are almost more than 2000 species are extinct of native bird species. The IUCN Red List documented the extinction of 784 species in last 500 years. अगर हम 2004 जो IUCN की रेड लिस्ट है उसकी बात करते हैं, तो वर्ल्ड में 784 स्पीसीज हैं वो लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. उनमें से 338 related to vertebrates, 359 invertebrates, and 87 related to the plants. Some well-known example of the extinct species are dodo, that is extinct from the Mauritius, quagga from Africa, thylacine from Australia,
stellar sea cow from Russia, and three subspecies of tiger, Bali, Javan, and Capuchin are extinct from the earth. So, dodo extinct from the Mauritius. So, this is dodo, and this is quagga. This is extinct from the Africa. The stellar sea cow is extinct from the Russia. Thylacine from Australia. This is the passenger pigeon that is also extinct. This is chitta from India, and these three species of tiger, Bali, Java, and Capuchin is extinct. So, what is the present rate of species extinction? So, it is up to 100 to 1000 species extinct per 10,000 species in a duration of 100 years. So, this is the extinction rate of the species 100 to 1000 species per 10,000 species. Out of 10,000 species in how many times? 100-year duration. So this is almost 1000 times more than the natural rate of extinction. So now you can imagine the rate of extinction is very high when we compare to the natural rate of extinction, and this is mainly due to the anthropogenic activities, human habitat loss, industrialization, deforestation. All these factors are responsible for the loss of biodiversity. The Living Planet Index, which measures the biodiversity abundance level, is showing a persistent downward trend. Okay, so because the biodiversity is continuously declining, so this index showing the downward trend. On an average, monitored species population has declined 58% since 1970. अगर हम 1917 से देखते हैं तो स्पीसीज की जो पॉपुलेशन हम जो मॉनिटर कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, उनकी जो पॉपुलेशन 68% है वो डिक्रीज हो गई है. In tropical forest, there has been 40% decline of species since 1970. सो जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उनमें जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन की रेट है वो ज्यादा हायर है. Whereas in the temperate grassland, the species declined by 18%. In freshwater habitat, 81% since 1970. So here you can see the habitat decline in the freshwater, that is 81%. That is almost double than the tropical forest. So now what are the causes of biodiversity loss? So there are several causes. We already discussed the natural and man-made. So some important factors now we are going to discuss. First one is the habitat loss and fragmentation. Habitat loss means we directly suppose there is a tree and on tree there is a birds they are living. So that tree is the particular habitat for the particular bird. If you cut the tree, then this is the habitat loss. If we cut the forest, then it is the habitat loss. And fragmentation means if we divide the land in many parts, suppose there is 1 hectare forest, then we divide the forest, we use 1 hectare out of 1 hectare, some for the construction activity, some for the recreational purpose. Likewise, we fragment. Okay, so fragmentation is also responsible for the loss of biodiversity. So this is one of the most driving factor for loss of the biodiversity. So once covering more than 40% of Earth's land surface, these rainforests now cover not more than 6%. So earlier the rainforest covering 14% Earth's land surface, now they are covering only 6% because they are degrading very fast. The Amazon for rainforest, that is also known as lungs of the planet or lungs of the Earth. They are also continuously declining. Their area is also shrinking due to the continuously deforestation, urbanization, industrialization, commercial activities. So all these factors are responsible for the loss of biodiversity, or we can say loss of habitat. The second factor is the overexploitation. When we overexploit the resources like food, fodder, feed, anything on the earth that create the loss of biodiversity.
because all living being things depend on the resources. It may be food, it may be shelter, it may require space. Okay, all these things, if we disturb, then it creates the loss of biodiversity. Co-extinction. Okay, when a species become extinct, the plant and animal associated with it is obligatory way also become extinct. Suppose two species they living in together in the symbiosis. In many cases, if one species die or extinct, the another is also not able to survive there. So that is known co-extinction. Now the alien species invasive, or we can say invasive species, that the foreign species we introduce in the particular area. So when these species come into that, then these new areas, they develop themselves and they extinct or remove the local species of plant and animal. Okay, a well-known or very famous example of Nile perch. The Nile perch, this is a fish species that introduced in the Lake Victoria in the East Africa, and due to this Nile perch, it removed more than 200 species of cichlid fish in the lake. So this is known as invasive. If we see the invasive in the plants like carrot grass, that is known as Parthenium lentana tamara and water hyacinth iconia. These are also the invasive or alien species. A recent illegal introduction of African catfish for aquaculture purpose is posing threat to the indigenous catfish to our rivers. So the African catfish also a invasive species of fish that is uh, a threat for the indigenous catfish in our rivers or in aquaculture system. Now the natural causes biodiversity loss. In natural causes like uh, flood, earthquake, and natural disasters are responsible. Then after poaching and hunting. So poaching and hunting, they are directly related to the loss of biodiversity in the species. Then after environmental pollution, air, water, soil, thermal and radiation, plastic pollution, these are also degrade the loss in biodiversity. The global climate change. Nowadays, climate change is also a major driver in the biodiversity loss. So when there is a change in the pattern, change in the temperature, change in the pH of ocean, change in the extreme events, they create loss in the biodiversity. So till now we have discussed the factors of biodiversity loss. Now we are going to discuss about the how we can conserve the biodiversity. So now the conservation of biodiversity. So biodiversity conservation means protection, upliftment, management of biodiversity in order to derive the sustainable benefit of present for present and future generation. So biodiversity conservation means we should protect the biodiversity, we should uplift or we should develop, proliferate the biodiversity, and we should manage the biodiversity in such a way that present and future generation can arise the benefit from these resources. So what are the objective of biodiversity conservation? So first one is to protect and preserve species biodiversity, sustainable management of resources, and prevention and restoration of ecological process, that is the life support system. So basically there are two method of biodiversity conservation: in situ biodiversity conservation and ex-situ biodiversity conservation. So this is very well known method of conservation. So we will discuss one by one. So first of all we will see the total classification of biodiversity conservation. Okay, so in total classification, here you can see there are two broad categories: in situ and ex situ. So here you can see first one is the in situ and second one is the ex situ conservation of biodiversity. Then after the in situ conservation is classified into there are protected areas, several protected areas. So these protected areas include the biodiversity hotspot,
secret groves, national park, biosphere reserve that may be terrestrial or marine, wildlife sanctuary and gene sanctuary. Important है इसको याद रखना. Gene sanctuary is a in situ conservation method. Then after ex-situ conservation, ex-situ means when we conserve the particular species out of their native place. That is ex-situ conservation. Okay, so the ex-situ conservation further is divided into is carried out through the seed bank, gene bank, farm gene bank, cryopreservation, botanical garden, zoological park, aquaria, arboretum, botanical garden, होम गार्डन, सीक्रेट प्लांट्स. सो यहाँ पे ध्यान रखना, जीन बैंक इज ए एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड जीन सेंचुरी इज ए इन सिटू कंजर्वेशन मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे किसमें क्या आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिटू कंजर्वेशन. सो इन सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इंपॉर्टेंट है, इसको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं स्पीसीज को, उसको वहां से रिप्लेस नहीं करते हैं. So in this method the natural ecosystem is maintained and protected. तो किसी स्पीसीज के पर्टिकुलर नेचुरल सिस्टम, पूरे सिस्टम को मेंटेन किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. So about 4% of total geographical area of India is used for in situ conservation. So जितने भी in situ conservation के जो मेजरमेंट है वो ऑलमोस्ट 4% एरिया कवर करते हैं अर्थ इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का. So what are the method of in situ conservation? Biosphere reserve, national park, wildlife sanctuary, biodiversity hotspot, gene sanctuary and secret groves. So इसमें से हम पिछले वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉटस्पॉट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे इस वीडियो में हम थोड़ा जीन सेंचुरी और सीक्रेट ग्रूव के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जीन सेंचुरी क्या होती है? जीन सेंचुरी इज एरिया वेयर द प्लांट इज कंजर्व्ड. ओके, इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के प्लांट को इनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है. इसका एक जीन सेंचुरी का सबसे वेल नोन एग्जांपल है कि जो मेघालय में, इंडिया में केवल एक जीन सेंचुरी है और मेघालय के जो गारो हिल्स हैं उनमें सिट्रस के जो वाइल्ड स्पीसीज है उनको कंजर्व किया जाता है और इसका नाम एक सेंचुरी है जिसको टूरा रेंज सेंचुरी ऑफ मेघालय के नाम से जाना जाता है. याद रखना, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टूरा रेंज सेंचुरी ऑफ मेघालय that is located in the Garo Hill of Meghalaya and this is particularly used for the protection of the wild species of the citrus. The plans to open more such sanctuaries are underway. Plans, not plant, plans. There are government have more plan to protect the species through gene sanctuaries. So this is the gene sanctuary. Now the secret grooves. Secret grooves means these are the conserved area for the wildlife protected by the community due to the religious belief. तो किसी कम्युनिटी के लोग पर्टिकुलर रीजन को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर हमने इसको कुछ नुकसान पहुंचाए तो मतलब पाप लगेगा या इस टाइप का सिस्टम रहता है. तो दीज आर द बेस्ड ऑन द वी प्रोटेक्ट द एरिया, पर्टिकुलर कम्युनिटी प्रोटेक्ट द एरिया बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स. ओके, it is mostly part of forest where wildlife is completely protected. In India, around 14,000 secret groves are reported. They are basically three types: the traditional secret groves, temple groves, and burial and cremation grounds. So these are the three type of basic secret groves. Sarpa cow, सर्पा काऊ और स्नेक ग्रूव, ए काइंड ऑफ होली ग्रूव फाउंड इन केरला. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द सर्पा काऊ. इट इज ए सीक्रेट ग्रूव यूज फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ द स्नेक इन द केरला. उमंग लाई, दिस इज ए फॉर्म ऑफ होली सीक्रेट ग्रूव फाउंड इन द मणिपुर. एंड द मैक्सिमम सीक्रेट ग्रूव फाउंड वेयर इन महाराष्ट्र. द मैक्सिमम सीक्रेट ग्रूव लोकेटेड इन द महाराष्ट्र. So this is about the secret grooves. So here this is the list of some
state, and these are the number of secret group documented in the particular state. So from here you can see the maximum number of secret groups documented in the Maharashtra. So now what are the advantage of in situ conservation? So in situ conservation के क्या होते हैं? एक तो we protect the natural habitat of species. First thing. Second, we ensure protection of the large number of population. So जितनी भी species की population है उसके protection पे हम focus करते हैं. इट इज ए इकोनॉमिक एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंजर्वेशन. ये एक इकोनॉमिक वाइबल है, मतलब इसके लिए कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम उन्हीं के नेचुरल एरिया को काम में लेते हैं. एंड फोर्थ वन, इट डज नॉट रिक्वायर स्पीशीज टू एडजस्ट इन न्यू हैबिटेट. तो इसके लिए किसी स्पीशीज को एडजस्ट होने की जरूरत है, ऑलरेडी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होती है. सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ दिस इन सिटू कंजर्वेशन. नाउ द एक्स सिटू कंजर्वेशन. So the ex-situ conservation of biodiversity involves the breeding and maintenance of endangered species in artificial ecosystems such as zoo, nursery, botanical garden, gene bank, etc. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्रीडिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं मेनली उनको फोकस करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम या कंट्रोल कंडीशन में हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं. So there is less competition for food, water and species among the organism. So इसका एक एडवांटेज क्या है कि स्पीशीज के बीच में कंपटीशन कम होता है, किसके लिए? फूड, वाटर और स्पेस के लिए. It is a method in which part of population or entire endangered species taken from its natural habitat which is threatened, and breeding and maintenance of these species take place in artificial. So इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी endangered species होती है या threatened species होती है उस पूरी species को हम protect करते हैं. The Ex-situ conservation consists of the breeding and maintenance that include the zoo, botanical garden, gene bank, all these measures for the conservation of biodiversity. Now, what are the advantages of the ex-situ conservation? So first one है essential life sustaining condition. अगर कोई स्पीशीज एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, तो उस केस में हम स्पीशीज को उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. सक्सेसफुल ब्रीडिंग की जाती है किसी भी स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए. स्पीशीज को है वो हंटिंग और पोचिंग से प्रोटेक्ट किया जाता है. जीन टेक्निक की मदद से स्पीशीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है और किसी एरिया में री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन. सो ex-situ कंजर्वेशन के क्या क्या मेजर्स हैं हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज द जीन बैंक. ओके, सो जीन बैंक are the type of biorepository that preserve the genetic material. So जीन सेंचुरी है वो क्या है? इन situ कंजर्वेशन. एंड जीन बैंक है ex situ. तो जीन बैंक में हम क्या करते हैं, ये एक बायो रिपोजिटरी होती है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करते हैं. फॉर प्लांट्स इट इज डन इन विट्रो स्टोरेज, द फ्रीजिंग कटिंग्स और प्लांट स्टोकिंग और द सीड. इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स के केस में उनको फ्रीजिंग करते हैं लोअर टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करते हैं उनकी कटिंग को, उनके स्टोक्स को, उनके सीड को. एनिमल्स में क्या जाता है, उनके स्पर्म और एग्स को फ्रीज किया जाता है, स्टोर किया जाता है. कोरल के केस में कोरल के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको वाटर टैंक्स में कंट्रोल कंडीशन में स्टोर किया जाता है. So genetic material in gene bank is preserved in variety of ways such freezing at -196 डिग्री सेंटीग्रेड in the liquid nitrogen. ये important है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन. उसके बाद में एक टर्म आता है फील्ड जीन बैंक. सो इट इज ए मेथड ऑफ सोइंग प्लांट्स फॉर कंजर्विंग द जीन. अगर कोई वाइल्ड कल्टीवेटिंग क्रॉप या स्पीशीज है तो उसको हम एक पर्टिकुलर फील्ड में कल्टीवेट करके उसके जीन को हम प्रिजर्व करते हैं. सो दैट इज द फील्ड जीन बैंक. सो
42,000 varieties of rice are conserved in the Indian Institute of Rice Research, उड़ीसा। तो वहां पे फील्ड जीन बैंक और वहां पे मोर देन 42 स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है। सो द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफब्रिस्ट स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल जीन बैंक कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली। द नेशनल जीन बैंक कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? सबसे पहले नेशनल जीन बैंक इन 1996 टू प्रिजर्व सीड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। It was established in the 1996 National Gene Bank. So National Gene Bank having four type of facilities. First one is the seed gene bank. वहाँ पे सीड को प्रिजर्व किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्रायोजेनिक बैंक, वहाँ पे सैंपल्स को स्टोर किया जाता है -170 से लेके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैंपल्स को स्टोर किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज द फील्ड जीन बैंक, वहां पे फील्ड पे कल्टीवेट करके प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। तो दीज फोर टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद द नेशनल जीन बैंक विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996. So the National Gene Bank stored various type of crops like cereals, millets, medicinals and aromatic plants. So नेशनल एनिमल जीन बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है? नेशनल एनिमल जीन बैंक सिचुएटेड है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल, हरियाणा। अब हम बात करेंगे सीड बैंक की। सो सीड बैंक इज ए फॉर्म ऑफ जीन बैंक बिकॉज इट इज ए वन ऑफ द फैसिलिटी that is provided into the gene bank. So seed bank store the seed to preserve genetic diversity. So survival of seed that is known as orthodox seed that can be extended by the dry and low temperature. So the orthodox seed are used that protect or stored at low temperature or in dry conditions. So level of dryness and coldness depend on the longevity of the particular seed. If there is more moisture, the seed will not store for the longer time. So these are two important factors, dryness and coldness, that decide the longevity of a particular seed. So recently in India, in Ladakh, there is a seed bank was established, Indian Seed Vault, Chengla in Ladakh, in India, it was established. And this facilities was jointly developed by the Defense Institute of High Altitude Research and NBPGR in 2010 under the DRDO. So it store more than 5,000 seed accessions for the longer time or for the adverse conditions. So where is the world largest seed vault established? So it was established in the Norway, the Svalbard Global Seed Vault or Doomsday Vault, that is known as the Doomsday Vault or Svalbard Global Seed Vault, that is located in the Norway. So Navdhanya Community Seed Bank. So Navdhanya is a NGO that is also working on the protection of the seed. So the Navdhanya that established by this Navdhanya Seed Bank established by the Navdhanya NGO, and this bank managed by the farming community and conserve the traditional seed variety. So Navdhanya set up almost 150 seed bank in 22 states in past 30 years. So now the arboretum. So arboria या arboretum क्या होता है कि ये जो भी एक पर्टिकुलर बोटेनिकल गार्डन जो पर्टिकुलर वुडी स्पीसीज को के वहाँ पे ग्रुप होता है, तो हम कह सकेंगे बोटेनिकल गार्डन विथ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वुडी प्लांट स्पीसीज दैट इज नोन एज आर्बोरेटम। सो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया हो जिसमें कई टाइप की स्पीसीज होती हैं, वुडी स्पीसीज। सो दिस इज नोन एज आर्बोरेटम, जिनको हम मेनली साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी काम में ले सकते हैं, जिनको इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन के लिए स्पीसीज प्रोटेक्शन के लिए भी हम काम में लेते हैं। आर्बोरेटम बेसिकली ये एक्स-सिटू मेथड ऑफ द कंजर्वेशन। अगर आर्बोरेटम
में हम कोई पर्टिकुलर अगर कोनिफर्स की स्पीसीज लेते हैं या उन्हीं के लिए ग्रो करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पिन्नेटम। तो इंडिया में एक आर्बोरेटम है कहाँ पे? उधम उदक मंडलम आर्बोरेटम है जो कहाँ पे लोकेटेड है? ऊटी में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1992। नाउ द बोटेनिकल गार्डन, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्बोरेटम इज ए पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर डिफरेंट वुडी प्लांट स्पीसीज होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। बोटेनिकल गार्डन एक गार्डन होता है जिसमें प्लांट्स की लार्ज वेराइटीज होती हैं, स्पीसीज होती हैं, और वो पर्टिकुलरली लेबल्ड होती हैं विद देयर साइंटिफिक नेम पे। सो दिस इज नोन एज बोटेनिकल गार्डन। Okay, so botanical garden be can be used for the plant research purpose, cultivation purpose, preservation purpose, or display purpose, or for education purpose, for awareness purpose. So Colonel Robert Kidd, he was an army officer in East India Company, established India's first botanical garden in 1787, the Royal Botanical Garden in Calcutta. So 1787 में रॉबर्ट किड ने सबसे पहले रॉयल बोटेनिकल गार्डन स्टैब्लिश किया था इंडिया में। ओके, उसके बाद में इन 2009 इट वाज रीनेम्ड एज आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। सो द बोटेनिकल gardens आर कम अंडर द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज again come under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The world's first university botanical garden was established in the Padua in 1545। सो एक बेसिक जीके टाइप थिंग्स है जिनको आप याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।